Welcome back guys to another chess jam video with chess videos मिलते हैं और जैसे कि हम आपके लिए लेके आए हैं और एक नया चेस वीडियो। आज चेस में आप पैटर्न देख सकते हैं, सही में डिस्ट्रक्शन 100% डिस्ट्रॉय इन सेकेंड्स। वाइट ने पूरा ब्लैक को तबाह कर दिया। आगे आप बाकी का वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और of course this game is not played by me. This game is Good Guy Abhi versus a random player. If you guys have not checked out anybody versus random player, that is me versus random player, तो links in the description, वो वीडियो चेकआउट करके आइएगा, अच्छी वीडियो है वो भी। तो now let's get into the video. Let the destruction begin. Cowards do that and that ain't you! You're better than that! वो अभी गुड गाय अभी तुमने तो डिस्ट्रक्शन मचा दिया यार। पूरा ब्लैक की पूरी आर्मी खत्म कर दी एक नाइट ने। बस एक नाइट ही चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें पूरे आर्मी को खत्म करने के लिए। देखिए इधर से शुरुआत हुई आर्मी को खत्म करने की, नाइट टेक्स पॉन के साथ, और फिर बाद में नाइट टेक्स पॉन चेक, फिर फोर्क, क्वीन को लिया विद चेक, नाइट को चेक के साथ लिया, रुक को ले लिया। कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीसेस को अकेले नाइट ने ले लिया। देख रहे हो आप। और फिर आखिरीकार नाइट F8 के बिशप को लेके मर गया। दिस इज कॉल्ड एज किलर नाइट। आई कॉल इट पर्सनली किलर नाइट। तो आते हैं पोस्ट गेम एनालिसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मिस्टेक हुई इस पोजीशन पे, ब्लैक ने खेला D5। मतलब ये तो क्लासिकल ओपनिंग है इस गेम में। अगर तुम कुछ और मूव्स, मतलब नाइट अगर मूव करते हो अपना, फॉर एग्जांपल एनी रैंडम स्क्वायर पे, तो इस चेक से तुम्हारी sweet is gone with this check and you cannot do anything. See, just cannot do anything. So D5, okay, it's not bad but it's not very good. So what would have been another good defense for black over here? So of course queen e7। तो अब बोलो कि यार क्वीन टेक्स नाइट के बाद तो हमारा नाइट भी सेफ है। बिल्कुल नहीं, ये D6 के बाद नाइट को हिला नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम हिलाते हो तो क्वीन चली जाएगी और नाइट अकेला किंग को चेक बिल्कुल नहीं दे सकता। तो what best you can do is support it with your pawn, because after the knights are gone you get a pawn extra। और फिर अपनी मतलब जो पॉन गवाया है उसे डिफेंस के लिए नाइट C6 तो खेलना पड़ेगा, और नाइट C3 अपने हैंगिंग क्वीन को डिफेंड करने के लिए। और यही कुछ होता, क्वीन टेक्स, क्वीन एक्सचेंजेस, और बाद में ब्लैक के लिए सेंटर नाइट का एडवांटेज मिलता। तो अब आते हैं इस पोजीशन पे, इस
D5 के बाद वाइट ने खेला F3 और अपने किंग फाइल को ओपन कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और ब्लैक ने इसका फायदा भी नहीं लिया। मैं इसका फायदा आगे जाके बताऊंगा क्या है। तो लेट्स गो मूव बैक। व्हाट वाज अनदर गुड मूव फॉर वाइट ओवर हियर? ऑफ कोर्स तुम्हें राइट हैंड किंग साइड के किंग डायगोनल को ओपन नहीं करना है। You have to play D3, attacking this knight over here, as you can see. So of course ये नाइट तो गया है, क्योंकि हमने बताया था अगर ये नाइट थोड़ा भी मूव हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वीन E7 to the same. Of course pawn takes, queen takes, pawn takes, और अपने हैंगिंग क्वीन को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज दिस टाइम इज नॉट फेवरेबल. You will just, you know, this bishop which is trapped because of queen, you will just open it. तो queen exchange नहीं करेंगे. Knight C3 defending the queen, और defending that D5 hanging pawn castle. और जब क्वीन अभी पिन नहीं है और क्वीन अभी ब्लैक की फ्रीली मूव होने वाली है तो क्वीन एक्सचेंज करना ही पड़ेगा. फिर बिशप D2, जस्ट इन केस हमें ये डबल पॉन को अवॉइड करना है. और फिर ऑफ कोर्स बिकॉज दिस वन इज हैंगिंग, तो इसका जवाब होगा लॉन्ग कैसल से. और ब्लैक इज यू नो काइंडा नॉट कनेक्टेड हिज रूक्स, और कनेक्ट कर भी नहीं सकता क्योंकि नाइट के लिए एक ही जगह बचती है जाने के लिए. और फिर बाद, क्योंकि ये तो नहीं है, और अगर नाइट इधर जाता है तो डायरेक्ट बिशप अटैक करके डबल पॉन, और ये पॉन तो मतलब जो ऊपर आएगा वो पॉन अनसपोर्टेड होगा, और वो पॉन फ्री में जाने की संभावना 99% है. सो वाइट इज आफ्टर ऑल गुड इन दिस सिचुएशन. तो अब आते हैं इस पोजीशन पे जिधर ब्लैक ने किया F6, और ये जो ओपन किंग की डायगोनल थी उसे बंद कर दिया. खुद के पैर पे कुराठी मारना इसे कहते हैं. सो लेट्स गो मूव बैक, find another move, the best move for black over here, which would have changed the game drastically. Of course queen h4 check. मैंने हिंट दे ही दी थी कि इस डायगोनल को ब्लॉक कर दिया. तो ऑफ कोर्स इसका डिफेंस G3 से हो सकता है, और दूसरा डिफेंस है किंग D1. ये डिफेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. आप खुद ढूंढ के बताइए कमेंट सेक्शन में, इफ white plays king D1 what will happen next. So let's see this defense first of G3. Of course this can be shattered in one move, और अब अभी क्वीन पर अटैक है और नाइट चेक नहीं दे सकता, मतलब डबल चेक. So white has to accept that nice sacrifice and रुक गवाना पड़ता है. और ऑफ कोर्स इस टेक्निक से रुक ले लिया जा सकता था जो हमने गवाया, पर बाद में नाइट कैन गो टू C6 एंड ब्लैक इज रेडी फॉर द लॉन्ग कैसल. और वाइट के पास अभी भी अपने अनडेवलप्ड पीसेस है, अपना एक हैंगिंग नाइट है जिसे छुड़ाना है. तो इन ऑल ब्लैक इस पोजीशन पे अप रहता, पर खैर ये हुआ ही नहीं. तो अब हम आते हैं इस पोजीशन पे वाइट ने किया 8h d5, पर you know, instead of grabbing a pawn you can actually grab something big, spot it out. So if you guys thought of it और हमने पॉज करके सोचा होगा तो ये मूव तो तुम्हें पता ही चल गया होगा. इस मूव के दो डिफेंस है, एक है G6 जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और एक है किंग टू E7. किंग टू E7 पे क्वीन टेक्स E5 होके नॉर्मल, मतलब क्वीन टेक्स E5 के बाद या तो किंग F7 बढ़ेगा या फिर किंग D7 को बढ़ेगा. इन दोनों केसेस में तुम्हें ये D5 का पॉन फ्री में मिलेगा, और तुम बाद में क्वीन एक्सचेंज भी कर सकते हो. तुम्हारे पास सेंटर पॉन भी है, और
तुम अपने नाइट और बिशप्स को डेवलप कर सकते हो. एक्चुअली किंग मूव इज द बेस्ट फॉर हाइट, आई मीन फॉर ब्लैक ओवर हियर. बट इफ black decides to go g6, it's actually tricky right here. Okay, so by g6, of course, queen takes e5 check, and if black decides to put queen over here, pause the video. Can you guys find the best move over here? Yeah. Many of you guys might have thought that why not to take that free rook over here? But have you guys thought of this? Check. Okay, so what's big deal? I'll just go here. Note that you cannot do g3 because then remember. So instead, go in d1. The bishop comes in the game, and what to do now? Stop at the bishop, of course. After the bishop exchange, this check. Now what? Of course, you have to go here, or else you'll use your g2 pawn, and also your rook will be in bad shape then. This check, of course, because cannot go to e2, or else that would be a repetition check. And also in this case, black will have this best move of queen e6, direct checkmate threat on next on the next move, that is queen to e1 checkmate. So of course white has to reply by king f2, and so this thing will continue forever because king to e2 is not so good. So you guys know what the consequences are if you play queen takes h8. So now what to do over here? Of course, bishop check. Now black has rather three defenses for that. First will be knight c6. That's your homework. Of course, you guessed it correct. And of course, that homework is not gonna be so like difficult. Like I could just tell you over here, black plays knight c6. Then you just have to exchange the queens, and then pawn takes to d5. He will either lose knight in the pin, or he will white will kind of get a huge center pawn advantage if he captures with king, and his castle will be destroyed, black castle. So after that, c6 is actually a good defense because bishop to c7 will just exchange the bishop and exchange of the queens, and then d5 pawn will be for free. Of course, then center pawn advantage, white is in winning position. So c6 actually is a good defense for this, and then you can grab the rook. So you guys know now, even if queen h4 check and the king moves after the bishop check, you can just put your bishop, and then you won't have rather you can just move your king to f1, and then queen will the only way to check your king is queen n4, and after this check you can just put your king to e1 again, and if bishop checks, and then you can just bishop to e2. That will be a good, you wanna see. So I just annotated it. Of course you'll have to grab the bishop over here. Also bishop to f queen to f4 check, and then king e5, and then this will continue, but g5 is now there to prevent this check. h4 check, g5 is there to prevent it. So now after the bishop's gone, you can just have a positive trade, get that pawn free, and of course white can win this game easily hereafter. So now let's go to this position over here.
white played d3. That's actually a mistake. Yep, that's a mistake. You heard me correct. Now what to do? Didn't I call this knight a killer knight? Yep. You can see? What does that mean? Those annotations mean? It's a threat to the queen, also a threat of a 4 in the next move. Now how to get out of this situation? Try to figure it out as a black. Of course, to get out of any situation, you can just check the king and then go to the defense place. Then after bishop to g2, that is pressurizing this b6 pawn and locking the bishop over there. You first have to, protect those both with c6. Then after this, white has a good advantage to finish off black. White has his pieces developed right over here. After 1 and 2 moves, he's ready to castle. His how to do this? Yes, his rook, after he castles alongside, there will open d file for white over here. Then of course black has to do something about this pawn, this hanging pawn over here, only with the queen as a support. After d4 and queen exchange, his pawn is sure to, like, vanish away, something like this. And then castle, and this d pawn is kind of like a passer. And then you have to bring your white will bring his rook to double attack. Of course, first black cannot go his knight over here. He has to do something about his knight. If knight moves first, then there will be a blockage for bishop. So this bishop needs to get out and then knight to a safe spot, because of course I'll suggest never put your knight over here. Okay, like until and unless you don't have a choice, do not put your knight in the corners. His bishop is trapped over here. He has to put the g pawn, and then of course his king side castle is destroyed totally, and so he has to castle queen side for a better defense. But after white castles and this d file is submitted to the rook, there will be a lot of issues for black's castle. Of course he has to take care of the d pawn, castle pawn, because his e5 pawn is as good as dead. So it's another winning. So now let's go to the last one. This, after the d3, black played e4, and he just gave up a pawn for free, totally free of cost. You don't do that, right? You want to go move back? Let's see. Of course, win the knight, which caused so much of destruction. Win it. Why do you have it? Of course, and after takes, it's a fork. So white has to do something about it. The best defense, then just castle, because you need to castle. And of course white has to do castles of but if he does castle, then bishop to g4 will be, if white castles at this point, it will be a direct attack on his indirect attack on his rook. So white is prevented from castles. Yes, you can say prevented, not blocked, but prevented from castles. So, and of course he has to not move this bishop. Rook has gotten full f file on control, so black over here is in a solid advantage. He just needs to develop his knight and his other pieces. So this was the game, and of course from here you can say, make do not make too much blunders, and of course castle as soon as possible, because your king's safety matters first. Anyways, stay home, stay safe in this situation right over here, and we'll be back with another awesome video. And now let's sign off for today.